Hello everyone, in this video we'll be learning about website and web page. So let's start. Now, a website is in general contains information organized in multiple pages. That means बहुत सारे pages जिनको हम web pages भी बोलते हैं वो जुड़ के एक हमारी website create करते हैं. A website also referred to as a site in short is a collection of web pages related through hyperlinks. So that means it is a collection of the web pages which are interlinked through hyperlinks and it is saved on the web server. A visitor navigates from one page to another by clicking on the hyperlinks. That is, all the web pages in a particular web server makes a website. So all the pages of the website are integrated under one domain name and have a common theme and template. तो एक डोमेन नेम के अंदर जितने भी वेब पेजेस होंगे वो अब इंटीग्रेटेड होंगे. तो सारे इंटीग्रेटेड जितने पेजेस होंगे जिनका कॉमन थीम होता है और टेम्पलेट होता है, दैट मेक्स अ वेबसाइट. What is the purpose of a website? Why do we make website? So the purpose of the website is to make the information available to people at large. बहुत सारे लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करनी होती है तो हम वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं. Now, a website is a means that helps to communicate with people in a specific, transparent and user-friendly manner. So, if we have to communicate with the people in a specific or in a transparent and that too in a user-friendly manner, we can create a website. A website should be user-friendly and provide information to users with minimum efforts. तो कोई भी वेबसाइट होती है, it should be user-friendly so that उनको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े वो इन्फॉर्मेशन को और with minimum efforts they are able to find the information. Website should be designed keeping in mind different categories of people that will be visiting the site. So looking into the mind the different categories of the people that will be visiting the site, we have to design our website. Now some of the common purposes for which websites are designed are listed below. For example, if you are selling any product or delivering the service, you can create a website for that. If you want to post any or find any information on the internet, you can create a website. If you have to communicate with each other, you can create a website. You can also create a website for the entertainment purposes. Or you can also create a website by disseminating contents and software. For example, आपने कोई software design किया है and you want people to access that software, then you can create a website for that software and you can upload it there. From that website, users will be able to download that software. So these are the different purposes for the websites. Let's see what is a web page. A web page, also referred to as simply a page, is a document on the www that is viewed in a web browser. Now basic structure जो भी होगा web page का, it is created using HTML. So basic structure कोई भी web page होगा तो it is being created using HTML, that is hypertext markup language, and CSS, that is cascaded style sheets. So ये दो लैंग्वेजेस हमारी जुड़ के एक वेब पेज बनाती हैं. लेकिन अगर हमारी वेब पेज को इंटरैक्टिव बनाना है तो हम उसके अंदर स्क्रिप्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं और पॉपुलर स्क्रिप्ट्स इज जावास्क्रिप्ट या फिर हम लोग पाइथन भी यूज़ कर सकते हैं स्क्रिप्ट के लिए या PHP भी यूज़ कर सकते हैं. तो जावास्क्रिप्ट, पाइथन एंड PHP आर द 3 स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस वी कैन से. हमारा जो भी वेब पेज होता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द वेबसाइट. तो बहुत सारे वेब पेजेस जोड़ के एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं. बट एक सिंगल जो पेज होता है इट इज़ बेसिकली अ पेज विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक. नाउ द फर्स्ट पेज ऑन द वेबसाइट इज कॉल्ड अ होम पेज. आपका जो पहला पेज ओपन होता है किसी भी वेबसाइट पे उस पेज को हम लोग होम पेज बोलते हैं. सो ये अच्छी तरीके से याद रखना कि जो हमारा पहला पेज होता है किसी वेबसाइट पे दैट इज़ नोन एज योर वेब पेज. home page. So it generally contains information and links to all the related web pages.
So for example, if you open cbse.nic.in, जो आपका फर्स्ट पेज ओपन होगा, that page will be known as a home page, और फिर उस पेज के थ्रू आप दूसरे पेजेस पे नेविगेट कर सकते हो by clicking on the hyperlinks. Let's move further. Now there are two types of the web pages, static web page and dynamic web page. Let's see the difference between the static and the dynamic web page. A static web page is one whose content always remains static. इसका मतलब यह हुआ कि उसका कंटेंट चेंज नहीं होता है फॉर पर्सन टू पर्सन. दैट इज डिफरेंट कंप्यूटर्स पे या डिफरेंट लैपटॉप्स पे जब उस वेब पेज को ओपन करेंगे तो सबके पास वो सेम आउटपुट आएगा. Whereas a dynamic web page is one in which the content of the web page can be different for different users. Different users के लिए different output आएगा. Now, in a static web page, no additional processing is performed on the page. तो कोई इसमें extra processing नहीं होती है. लेकिन dynamic web page के अंदर before sending the requested web page, the server may perform some additional processing. लेकिन इसके अंदर कुछ additional processing होती है. Like getting information from the database, updating date and time, updating weather information, etc. And the content of such pages changes frequently, whereas the content of static web page never changes. Now static web page are generally written in HTML, JavaScript, CSS और उनका जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो normally .htm या फिर .html होता है. Whereas the dynamic web pages can be created using various languages such as JavaScript, PHP, ASP.NET, Python, Java, Ruby, etc. So dynamic web page बनाने के लिए हम different languages use करते हैं, whereas for creating the static web pages we use normally HTML and CSS. Okay, so thank you for this video. That's all in this video. We have learned about what are websites, what is a web page, what are the two types of the web page, that is a static and a dynamic web page. Thank you.